तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का NCTI के एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेशन नंबर 45। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपने फर्स्ट नॉलेज चेक के साथ। तो ये मैं आ चुका हूँ अपने पहले नॉलेज चेक में। टोटल 5 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट में कहा है कि आउटलुक ऑफर्स डैश दैट एनेबल यू टू इजीली फाइंड, सॉर्ट, फिल्टर और ग्रुप आइटम्स, कलर कैटेगरीज. What happens when you select a color category for an email? The email gets sorted in that category. To remove the applied categories, click dash. Customize, delete all categories. Identify which of the following images represent an email that has been categorized in the blue category. So fourth वाले को आप देख सकते हैं, blue color है यहाँ पे. You can assign dash to your messages to remind you to follow up on an issue. Tasks. ये हम आ चुके अपने सेकंड नॉलेज चेक में। 5 क्वेश्चंस हैं। Have a look at this picture. This event in this Outlook calendar has an icon. What does that stand for? So ये है category. What purpose does a reminder serve? It reminds you about the event. If you enter percent complete as 25, even though the status has been set as not started, it is automatically displayed as in progress. In order to switch to the tasks module, which icon will you click on? Tasks module, so this is the icon. You might find your task list cluttered with completed tasks. In this case, you can dash such tasks from the task list. Remove. So यहाँ मैं आ चुका अपने थर्ड नॉलेज चेक में। How does Outlook's Copilot improve email drafting? Automatically generates emails. This image best illustrates which Copilot AI capability. AI powered summarization. फोर्थ नॉलेज चेक में अगेन 2 क्वेश्चंस हैं। How does Perplexity AI differ from traditional search engines? It generates concise AI-powered answers. Which technology does Perplexity AI use to retrieve real-time information? Retrieval augmented generation. तो सभी नॉलेज चेक के बाद यहाँ मैं आ चुका हूँ अपने सिमुलेशन क्वेश्चन में। तो 2 ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा कि कैटेगरीज हेल्प अस टू फाइंड और सॉर्ट द इम्पोर्टेंट मेल फ्रॉम द इनबॉक्स. You have received an important email from your friend Kalpesh. You want to categorize this mail in blue category for your reference. Hence, apply the blue color category to the mail so you can quickly see the mail from inbox. Okay. तो कल्पेश थोरर को करना है आपको क्लिक। टैग्स में कैटेगरीज में आना, कैटेगराइज, वहाँ से ब्लू कैटेगरी दे दीजिए, यस पे क्लिक करिए एंड देन योर वर्क इज डन। सेकेंड में है यू हैव रिसीव्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट ईमेल फ्रॉम योर फ्रेंड अक्षय एंड यू वांट टू टेक फॉलो अप of that mail today itself. So assign a today flag to this email to remind you follow up on an issue mentioned in the mail. So अक्षय मूल पे आपको करना है क्लिक, फॉलो अप पे आ जाना है टैग्स ग्रुप में से, वहाँ से टुडे पे कर देना है, देन योर वर्क इज डन। सिमुलेशन क्वेश्चन के बाद सेल्फ पाथ लर्निंग है, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट में कहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सर्च बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक? इट हेल्प्स यू फाइंड योर ईमेल्स एंड अदर आइटम्स क्विकली. What is an event in Microsoft Outlook? An all-day activity like a holiday or a reminder. Microsoft Outlook lets you create a meeting event with as many details as you want. So yes, it's true. Identify the right steps to send a Word file using Outlook via email. So go to the File tab in Word menu, click Share and then Email. सेल्फ पाथ लर्निंग के बाद सेशन कंप्लीशन टेस्ट पे आ चुके हैं 10 क्वेश्चन के साथ। Which two of the following are examples of popular DBMS applications? Microsoft Access and MySQL. A company is migrated from paper files to a DBMS. Which two problems are they likely to solve immediately? Physical storage space issues. Difficulty in searching for old records. A YouTuber wants to keep a list of her video ideas and upload dates for personal reference. Which type of database is most appropriate for her? Individual database. An electricity company collects meter readings throughout the month but generates all bills only on the first of the next month. What type of processing is this? Batch processing. A car manufacturing company uses an object-oriented database. If SUV would a black Mahindra Thar with plate number MH011234 be considered an object? A bank's database has been corrupted due to a technical failure. Which two actions would have helped the bank avoid a permanent loss of service? Having a regular backup system, using a DBMS engine to restore data from backups. A startup company is worried about identity theft. Which two security measures will directly help protect their customers' ID? Data encryption and user authentication.
An Indian e-commerce app like Flipkart or Myntra shows you recommended for you items. What is this database doing in the background? Analyzing your past purchases to predict what you might like. Rahul receives an SMS saying his bank account is blocked and he must share his password to unblock it. Which security principle is being tested here? So, user authentication. A government portal stores sensitive citizens' documents such as ID proofs and certificates. Why is user authentication mandatory on such portals? To ensure that only the document owner or authorized official can view private data. इसी के साथ आपका सेशन नंबर 45 यहाँ पे होता है ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे सेशन नंबर 46, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।